Welcome to your 11th mathematics class. Now today I take a miscellaneous exercise of chapter number first. Okay, so the question number first say uh, decide among the following sets which sets are subsets of one and another. Okay, it means in the question you have given one set A, set B, set C and set D. Okay, आपने यहाँ पे क्या करना है, decide among the following sets which sets are subsets of one and another. ओके सो आपने ये बताना है कि जो फोर सेट्स हैं उन फोर सेट्स में कौन सा सेट्स किस सेट्स का क्या है, सबसेट है. ओके सो इन द फोर सेट A B C D, set A is in the set builder form. So at first you will change the set A into roster form because in set A we have element x. X is the element of real number and x satisfy the given equation. The equation is x square minus 8x plus 12 equal 0. So it means x, the value of x is uh, the real number value, and the which type of real number, those type of this type of x which satisfy the equation. It means at first you will find the all roots of the given equation. Okay, so because x square minus 8x plus 12 equal 0, at first we will find the roots of the given equation. Okay, so how we will find? So आपने इसका क्लास 10th में पढ़ा होगा quadratic equation. So factorize 12 and you will take those type of factor of 12 whose sum or difference is 8. 6 to ja 12 and 6 plus 2 is 8. Okay, x square minus 6x प्लस 2x बिकॉज 6 2 जा 12. ये तो पता है ना सबको, क्लास 10th में पढ़ा होगा. ओके, प्लस 12 इक्वल 0. नाउ फैक्टराइज, take here is not plus, here is minus because minus minus plus and sign is minus. Okay, now take x common, x minus 6, take minus 2 common, x minus 6 equals 0. Now x minus 6 into x minus 2 equals 0. If x minus 6 equals 0, so it means x equals so x equal first value of x is x minus, मैं sort कर रहा हूँ. Okay, so x minus 6 equals 0, so x equals 6. If x minus 2 equals 0, so it means x value is 2. So it means we have two value of x which satisfy the given equation. So the set A is in roster form, its value is 2 comma 6. So it means set A is in roster form, set B is in roster form, set C and set D. So tell me which set is the subset of another set. Okay, all sets are in roster form, set A, set B, set C and set D. Now 2 comma 6 is the element of A and 2 comma 6 is also the element of set B. It means set A के सारे element किस में है, set B में है. So we can say that A is the subset of set B. Okay, now after that in set A we have 2 comma 6 and set C we have also 2 comma 6. So it means all the element of set A are in also in set B. So it means set A is also the subset of C, comma set A is subset of C. Now all the element of set A are not in set D. Okay, now A का तो हो गया. अब B, all the element of set B are not in set A because here is 4, here is not 4. All the element of set B 2 4 6 are also in set B. So it means set B is the subset of C. Set B is the subset of C. All the element of set B are not in D. Now set C के सारे एलिमेंट A में नहीं है, सेट C के सारे एलिमेंट सेट B में नहीं है, सेट C के सारे एलिमेंट सेट D में नहीं है. ओके, सो सेट C जो है किसी भी सेट्स का सबसेट नहीं है. ओके, नाउ इन सेट D we have element 6. So in set A we have one element that is 6. So it means all the element of set D are in set A. So it means set D is the subset of set A. Now here is 6 and here is also 6. So it means all the element of set D are in set B. So set D is the subset of B, and here
All here is 6, and in set C we have also 6, so it means set D is also the subset of C, and set D is also the subset of C. That is our answer. Any tough? वेरी इजी क्वेश्चन. तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सेट, आपको 4 सेट दिए, कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है अथवा नहीं. Okay, so make question number first very easily. Now after that pause the video, and after that I take question number second. Now I take question number second. Okay, in question number second, question से मैंने question short में लिखा है. Okay, the complete question is in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. So it means you have in question number second you have given some statement, और उन statement को आपने determine करना है whether the statement is true or false. Okay, अब अगर false है तो आपने उसको क्या करना है, if true तो आपने उसको prove करना है, and if that is false तो आपने उसके examples देने हैं. Okay, so first statement is if x is the element of set A and set A is the element of B. So in question that is I check. Okay, if x is the element of set A and that is set A, because A set is here, that is set, so that is also set. If x is the element of set A and set A is the element of set B, so then x is the element of B. So that statement is true or false. Okay, so I check. Let set A equal, that is x, that is set x. Okay, now it means because x is the element of set A, so I take here one element, that is x. Okay, after that set A is the element of set B, and set B, in set B you have one element, that is set A. It means set A is set of x. So in set x, set B you take one element, that is set of x. It means set B के अंदर का आपने फर्स्ट एलिमेंट क्या ले लिया, set A ले लिया, complete that is. Okay, now in set B you take one more element. If you want to take one more, so you take. If you want to take Z, so you take. Okay, now because x is the element of set B, x is the okay, set of x is the element of B, so we can say that A is the element of set B. Okay, so, okay, A is the element of set B. Now look at, then x is the element of set B. So here check whether x is the element of set B. No, x is not the element of set B, because here आपको यहाँ दिख रहा होगा x दिख रहा होगा, but here is not only x, here is set of x, because that is set A, because that is set A, it means set A is set of x. Clear? So we can say that so x does not element of set B, because why? Because set of x is the element of B. Look at, set of x is the element of B, so we can say that x does not element of set B. So it means that statement is not true, it means that statement is false, and its example is this. Okay, now pause the video and note down. Okay, now I take its second part. Okay, in second part, if A is the subset of B and B is the element of C, then A is the element of C. Is the statement is true or false? Check. Let set A equal, I take one element, that is 1. आप चाहें तो अदर एलिमेंट भी ले सकते हैं, तो मैंने 1 लिया. ओके, एंड set B equal because A is the subset of B, it means all the element of set A are in set B, so I take 1 comma 2. Okay, so we can say that A is the subset of B because all the element of set A are in set B. Okay, after that I have a new set, that is set C. What happens set C? What happened in set C?
because set C set B is the element of set C. It means set C have one element, that is set B. Set B have set of 1 comma 2. So in set C I take 1 comma 2 and I take one more element, that is 3. अरे कोई भी ले लेते हैं हम, one more element, 1 2 3 4 any other. Okay, so because set B is the element of set C, because that is set B. Clear? After that, then A is the subset of C. So it means set A have, what is set A? Set A is set of one element, that is 1. So we can say that 1 does not element of set C. It means ये जो element है वो set C के अंदर है नहीं है, because set A is 1. So we can say that set A does not element of set C. Any tough? Very easy type of question number second. Okay, so I take 1 2 more parts. Okay, अब जो remaining होंगे वो आपको फिर घर से खुद बनाने पड़ेंगे. Okay, so I take 1 2 more parts. Okay, so pause the video and note down. Now I take its third part. Okay, in third part, if A is the subset of B and B is the subset of C, so A is the subset of C is correct or wrong? Guess. It means all the element of A are in set B and all the element of set B are in set C. So question say all the element of set A are also in set B. So it means that is correct. It means why? Because A is the subset of B. So it means that imply if X is the element of set A, it means set A have X element. Okay, if X is the element of set A, then X is the element of set B, and what is B is the subset of C. So it means set B have one element, one known element, that is X, because set A have X element. अरे set A के जितने element होंगे set B में होंगे. It means अगर set A के पास X है तो set B के पास भी तो X होगा. That is the definition of subset. अब set B के पास one known element है, that known element is X. So it means if X is the element of set B, so X is also the element of set C. Why? Because set B is the subset of C. It means all the element of set B are in set C. So it means, so what is the result here? So it means जो set A के अंदर का X element था वो set C में भी पहुंच गया. देखो, इट मीन्स सेट ए के अंदर जो एक्स एलिमेंट है, जितने भी एक्स एलिमेंट है, केवल मैं सिंगल वन एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्स इज अननोन. सो इट मीन्स all the element of set A are indicated by X. Okay, that are also in set C. So it means, so we can say that X is the, so if X is the element of A, then we can say that X is the element of C. So it means all the element of set A are also in set C. So it means, that means अगर सेट ए के सारे एक्स एलिमेंट सेट सी के अंदर भी पहुंच गए हैं. देखो ये, क्योंकि हम दोनों इन दोनों को कंबाइन किया ना, तो हमने पाया कि सेट ए के अंदर के जितने एक्स एलिमेंट है वो सेट सी में भी पहुंच गए. सो इट मीन्स A is also the subset of C. So it means that statement is true. Okay, any tough? A very easy type question. So remaining how many parts are here? So remaining 3 parts you make cell. Okay, so question number second is completed. Now I take question number that is third. Okay, very easy question है, एक बार बनाएंगे. ठीक है, अब जिसमें प्रॉब्लम होगी मेरे को बताएंगे. Now I take question number third. So question number third say let A, B and C be the sets such that A union B equal B union C. Okay, and A intersection B equal A intersection C. It means set A union B equal B union C. I have 3 sets. Okay, which type of set? In which A union B equal B union C. Okay, and A intersection B equal A intersection C. So we have, so that B equal C. So what is the solve of the question? Okay,
हम इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ से भी कर सकते हैं, बिकॉज हमको टू टाइप ऑफ थिंग गिवन है, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी। सो हम कहीं से भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से लेंगे तो इस पार्ट का यूज करेंगे, यहाँ से लेंगे तो इस पार्ट का यूज करेंगे। ओके, सो आई टेक बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब टू सेट्स का इंटरसेक्शन क्या है, सेम है। ओके, आफ्टर दैट आई टेक व्हाट आई टेक, so I take this part, a intersection b equal a intersection c. If you want to take this, so you take. Okay, अगर इससे करना ज़्यादा इससे भी कर सकते हैं। If I take a intersection b equal a intersection c, so I can say that a intersection b intersection, because in questions say so that b equal c, so I take intersection of b. सो मैंने एक बार इंटरसेक्शन किसका लिया, बी का लिया इस सेट के साथ, इक्वल किसके होगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। वाई आई कैन से दिस, एनीवन कैन टेल मी, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स इफ दैट इज एक्स, बिकॉज इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एक्स, सो इट मीन्स दैट इज ऑल्सो एक्स। वाई, अरे लुक एट, अगर ये x है, ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैंने x माना तो ए इंटरसेक्शन सी भी तो x होगा, बिकॉज बोथ आर सेम। ओके, अब मैंने बोथ सेट्स का इंटरसेक्शन एक बार किसके साथ लिया, सेट बी के साथ लिया। क्लियर है? नाउ नो, आई टेक इंटरसेक्शन, सो आई टेक हियर यूनियन, नॉट इंटरसेक्शन, सो आई टेक हियर union, because I take here intersection. If you take here A union B equal B union C, if you take this part, so what you do, if that is x, so that is also x, so you take that is x, so A union B intersection B equal B union C intersection B. Why? Because if that is x, so that is also x, so it means, देखो ये सेट ए है तो यहाँ भी सेट ए है, तो ए सेट का इंटरसेक्शन डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के साथ क्या हो रहा है, सेम हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सेम सेट है, अगर सेम सेट का दो अलग अलग सेट्स के साथ अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उनकी वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है? तो यहाँ पर यही चीज़ हमारी यहाँ पर मेन चेक करने की चीज़ है कि यहाँ पर हमने क्या किया कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, तो मैंने बोथ साइड क्या ले लिया, यूनियन ले लिया, किसका, बी साइड बी का। अगर आप यूनियन लोगे तो बोथ साइड इंटरसेक्शन लेना बी का। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे हमने सी का क्यों नहीं लिया, अरे उसकी बारी बाद में आएगी, पहले हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, नाउ आई टेक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑन इंटरसेक्शन, आई टेक distribution property. Okay, so what is distribution property? A union B intersection, A union B intersection B union C, B union B. Okay, check here, equal A union B intersection C union B. Okay, clear? Okay, that is right. After that, A union B intersection, what is B union B? B union B is B equal A union B intersection C union B. Okay, now after that, if A union B intersection B, it means all the element of set A and B and intersection B, so it means both sides में common क्या होगा, अरे सेट बी के तो सारे एलिमेंट आएंगे, बिकॉज ए यूनियन बी में तो ऑल एलिमेंट सेट बी के पहले ही आ चुके हैं, तो इट मीन्स कॉमन एलिमेंट क्या होगा, सेट बी का एलिमेंट होगा, सो इट मीन्स दैट इज सेट बी, बिकॉज ए यूनियन बी के सेट में ही, अरे ये है ना, दैट इज ए यूनियन बी इज दैट इज सेट ए सेट बी। अब इसका आप ए यूनियन बी का सेट बी के साथ यदि इंटरसेक्शन निकालेंगे क्या आएगा, सेट बी तो आएगा, दैट इज सेट बी equal A union B intersection C union B, that is my first equation. Okay, that is equation number first. After that I take one more part again,
Again, what happened? A intersection B equal A intersection C, that is given. I take this part. Okay. Now after that I take B equal C. So I take union of C. ओके अगर आप ये पार्ट लेंगे तो ये क्या लेंगे, सेट सी का लेंगे. सेम स्टेज यहाँ का अपोजिट होगा. ठीक है, यहाँ का यूनियन है तो इंटरसेक्शन लेंगे. इंटरसेक्शन वाला लिया तो क्या लेंगे, यूनियन लेंगे. ठीक है, अब मैंने इंटरसेक्शन वाला पार्ट रखा तो मैं यूनियन लूंगा बोथ साइड. सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी यूनियन इंटरसेक्शन सी यूनियन सेट सी. Now take distribution property of union on intersection. Now take, so we can say that A union C intersection A union C, A union C intersection B union C. Okay, that is B union C. Okay, equal. Now take here distributive property of union on intersection. A union C, A union C, A union C intersection. What is C C union C, C union C. Now so that A union C intersection B union C, okay, equal A union C intersection. What is C union C? C union C is C. Now after that A union C intersection B union C, okay, that is equal. What is A union C intersection? What is if that is set A and that is set C, so it means A union C is complete shaded part. So take intersection of C, that means set C. अरे सेट सी के यहाँ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही तो पार्ट आएगा. अरे कॉमन पार्ट लेना है ना. ए यूनियन सी में कंप्लीट पार्ट आ गया तो उसका सेट सी के साथ कॉमन पार्ट लेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा. इंटरसेक्शन इज कॉमन पार्ट. ओके, नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन से what is it means B union C. What is B union C here? Because in equation number first A union B, okay, and C union B. Okay, clear. So now A union C. Okay, now I think here not A union B equal, that is A union C. Okay, in question I take some mistake here because A union B equal A union C. Okay, that is some mistake here. So what is A union C? So what is A union C? A union C equal A union B. That is some mistake here. Okay, so I can write here A union C equal A union B. So A union B intersection. What is B union C? B union C is C union B. Why? Because that is commutative property. Okay, equal C. That is my equation number second. That is here. Okay, and B union C equal C union B. So now according to equation number first and second, so by equation number first and second, look at its value is A union B intersection C union B. A union B intersection C union B. Its value is here. Its value is here A union B intersection C union B. Its value is here B. Okay, and its value is here C. It means both value is same. So we take cancellation law. So it means set B equals set C. So we can say that set B equals set C. Okay, now make question number third. Okay, now I take question number fourth. So in question number fourth, what is question number fourth? So that the following four conditions are equivalent. So in question number four, we have given four conditions. A is the subset of B, A minus B equal 5, A union B equal what is B, and fourth is A intersection B equal A. So it means the question say all the four conditions, first, second, third and fourth are equivalent. Equivalent का मतलब क्या हुआ कि जो फोर हमको जो कंडीशंस दी हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. अर्थात जो फोर कंडीशंस हैं
वो हमारी किसी एक कंडीशन से ही निकल सकती हैं. ओके, सो हाउ आई सॉल्व द क्वेश्चन. Okay, because A is the subset of B, so it means what is A is the subset of B? All the element of set A are in set B. So it means A is the subset of B. So the meaning of A is the subset of B is all the element of set A are in set B. That is our main first condition. Okay, that is our first condition. So I take now second condition. What is A minus B? So what is the definition of A minus B? Equivalence का मतलब समझते हैं कि हमने जो हमारे जो 4 conditions हैं वो सारी की सारी 4 conditions के अकॉर्डिंग हम एक दूसरे को निकाल सकते हैं. इट मीन्स एक कंडीशन को अगर हम फिक्स कर दें, सपोज दैट मैंने फर्स्ट कंडीशन को फिक्स कर दी, तो इसके अकॉर्डिंग मैं सेकंड कंडीशन को भी निकाल सकता हूँ, थर्ड को भी निकाल सकता हूँ और फोर्थ को भी निकाल सकता हूँ. तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होना. दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ A minus B? सो टेल मी. मीन्स A minus B इज all the element of set A. Okay, all the element of set A which are not in set B. Okay, so what is A minus B means? A minus B means all the element of set A are all the element of set A which are not in set B, because in first condition we say that all the element of set A are in set B. It means set A के सारे एलिमेंट हमारे set B में हैं. So in second condition all the element of, so second condition क्या कह रहा कि हमको A minus B में कौन से एलिमेंट लेने हैं? all the element of set A के लेने हैं which are not in set B. तो it means सेट ए के सारे एलिमेंट लेंगे जो सेट बी में नहीं है. बट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा कि सेट ए के तो सारे एलिमेंट सेट बी में है. तो इट मीन्स बिकॉज, सो इट मीन्स अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट किस में है? सेट बी में है. सो इट मीन्स बिकॉज ए माइनस बी वी हैव ए माइनस बी इक्वल 5. ओके, यहाँ पर हम ये भी लिख लेंगे बिकॉज वी हैव A माइनस बी इक्वल 5. सो इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इसमें इट मीन्स ए के कोई भी एलिमेंट बी में नहीं बचे. सो इट मीन्स, सो वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी. सो इट मीन्स सेट ए जो है बी का क्या है? सबसेट है. क्यों? क्योंकि हमको दिया है ए माइनस बी की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 5. तो इट मीन्स ए माइनस बी की अगर वैल्यू 5 है तो ए और बी का डिफरेंस 5 है. तो हमने A माइनस बी में क्या लेना है? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A लेने हैं विच आर नॉट इन सेट B, बट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A आर इन सेट B. सो इट मीन्स कब हुआ? जब सेट A जो है B का सबसेट है. ओके, तभी तो 5 होगा, अदरवाइज नहीं होगा. नाउ थर्ड पार्ट इज व्हाट इज A यूनियन B. सो टेक द डेफिनेशन ऑफ A यूनियन B. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ A यूनियन B हियर? ओके, सो A यूनियन B इज all the element of set A and B. Okay, because we have A union B equal B. अब आपने क्या लेना है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, आपने सेट ए और बी के सारे एलिमेंट लेने हैं. अब आपको क्या पता है कि ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है? बी है. ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है? बी है. तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी जब आप लेंगे तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? अब जब दोनों का यूनियन निकालोगे तो ए के ऑल सारे के सारे एलिमेंट ऑटोमेटिक आपको किस में मिलेंगे? बी में मिलेंगे. तो यही तो हुआ, तभी तो उसका यूनियन बी आया है. तो ये कब हुआ? जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं. सो वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी. नाउ फोर्थ पार्ट से A intersection B equal A. So what is the okay, after that at first I take A intersection B equal A. So what is all the common elements? So what is the definition of
what is the definition of A intersection B? What is the definition of A intersection B? I take at first fourth part के लिए all the common element of all the common element of set A and B. तो हम सेट A और B के सारे कॉमन एलिमेंट लेंगे. ओके, बिकॉज वी हैव गिवन A इंटरसेक्शन B इक्वल A. इट मीन्स A और B का कॉमन एलिमेंट क्या है? A है. तो इट मीन्स B के अंदर तो A, देखो A और B का कॉमन एलिमेंट कब आएगा? जब A के सारे एलिमेंट B में होंगे. तो A के सारे एलिमेंट B में है, तो इट मीन्स व्हाट इज, सो वी कैन से दैट A इज द सबसेट ऑफ B. सो इट मीन्स सारे के सारे जो रिलेशन है, ये दैट रिलेशन सेटिस्फाई A is the subset of B. सेकेंड रिलेशन भी सेटिस्फाई किसको कर रहा है? A is the subset of B. और थर्ड रिलेशन भी सेटिस्फाई किसको कर रहा है? A is the subset of B. So we can say that all four relation or the four relation are all the four relation are equivalent. So it means जो हमारे चार के चार रिलेशन है, so all the four relation are equivalent. So it means जो हमारे चार के चार रिलेशन है वो क्या है? इक्विवेलेंट है. तो कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी. दैट इज वेरी इजी, बट थोड़ा सा माइंड लगाना है. ओके, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है. ओके, नाउ यू मेक क्वेश्चन नंबर फोर्थ. नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. So in question number fifth, so that if A is the subset of B, then C minus B is the subset of C minus A. Okay, how I show that? Because C minus B is the subset of C minus A. So how I take? Let X is the element of C minus B. Okay, सपोज दैट मैंने सपोज किया कि C माइनस बी के अंदर एलिमेंट क्या है? X है. सो दैट इम्प्लाई, so what is that imply? That imply X is the element of C. X is the element of, what is the definition of C minus B? C minus B की definition क्या हुई कि what is C minus B? अरे आपको all, we take all the element of set C which are not inside B. What is the definition of C minus B? I take all the element of set C which are not inside C. So it means अगर C minus B के अंदर X एलिमेंट आ चुका है, तो वो X एलिमेंट किसका होगा? C का रिमेनिंग एलिमेंट होगा जो सेट B में नहीं है. So if let X is the element of C minus B, so that imply X is the element of C. So X does not element of set B. Okay, now I take X is the element of C. So X does not element of set A. Why I take here? Tell me. Look at, अगर set, because in first line you say that A is the subset of B. Because A is the subset of B, it means set A के अंदर के सारे एलिमेंट किस में होंगे? सेट B में होंगे. अब सपोज दैट सेट B के अंदर हमारा X एलिमेंट नहीं है. सेट B के अंदर अगर X एलिमेंट नहीं है, तो क्या सेट A में हो सकता है? गेस करो. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि A जो है वो B का सबसेट है. A is the subset of B. It means all element of set A are in set B. It means B के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट A में नहीं है. तो इट मीन्स अगर सेट B में X नहीं है, तो सेट A में हो सकता है? वो कभी नहीं होगा. सो अब देखो, X एलिमेंट C में है और X एलिमेंट A में नहीं है. तो इट मीन्स X इज द एलिमेंट ऑफ विच? C माइनस A. तो इट मीन्स X 100% किसके अंदर भी होगा? C माइनस A के अंदर भी होगा. तो आपको जो X एलिमेंट था वो C माइनस B के अंदर था, और X एलिमेंट आपको किसके अंदर भी मिल गया? C माइनस A के अंदर भी मिल गया. सो वी कैन से दैट X is the element of C minus B. So that imply X is the element of C minus A. So it means set C minus B के अंदर का जो एलिमेंट X है वो C minus A के अंदर भी मौजूद है. तो इट मीन्स
सी माइनस बी के अंदर के जितने भी एक्स एलिमेंट हैं वो सी माइनस ए के अंदर भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। क्लियर? सो वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट. So question number 5 is very easy. So now you make question number 5. So now I take question number 6. So in question number 6, what happened? Assume that power set of A, that is PA equal PB. So it means power set of A equal power set of B. Then show that set A equal B. So हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए थे, एक हमने थ्योरम भी बताया हुआ था. If A is equal B, so what means all the element of set A are in set B. It means A is the subset of B. अरे A और B, अरे टू सेट्स इक्वल कब होंगे? जब सेट A के सारे एलिमेंट B में हैं एंड B के सारे एलिमेंट भी किस में है? सेट A में है, तभी तो दोनों सेट्स इक्वल होंगे. ये बताया था ना, अगर A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट भी किस में है? A में है, तो दोनों सेट्स इक्वल होंगे. तो ये हमने यहाँ पर कंडीशन लेनी है. ठीक है, तो हमको गिवन, व्हाट इज गिवन? बिकॉज इन क्वेश्चन सॉल्यूशन इफ आई टेक व्हाट हैपन, बिकॉज पावर सेट ऑफ ए इक्वल पावर सेट ऑफ बी. सो व्हाट हैपन इफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल पावर सेट ऑफ बी? सो आई कैन से दैट पावर सेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी एंड power set of B is equal to power set of A. So what happen? अगर power set of A equal power set of B है तो it means दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे. It means power set of A भी power set of B का सबसेट होगा और power set of B जो होगा वो भी power set of A का क्या होगा? सबसेट होगा. Clear? That is clear. Okay. Now I take if power set of A is the subset of power set of B. So what is means? What is it means? It means is if, अब देखो what is power set of A? What is the definition of power set of A? It means all the subsets of set A. All the subsets of set A is called power set of A. It means set A के जितने भी हमारे सबसेट होंगे उनका जो सेट्स होगा that is called power set of A. So it means if I take capital X, not small x, because power set of A is the set of, power set of A is the set of all subsets of set A. If X is the element of power set of X is the element of power set of A because that is one set. Okay, it means power set of A के अंदर का जो X एलिमेंट है, if X is the element of power set of A, so X is also the element of power set of B. So it means power set of A के अंदर का जो X एलिमेंट है वो power set of B के अंदर भी है. Okay, now let, अब ये जो x है वो एक सेट है. बिकॉज वाई? बिकॉज x इज दिस, अरे इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड x इज द पावर सेट ऑफ b. सो दैट मीन्स x इज द सबसेट ऑफ a. बिकॉज वाई? बिकॉज पावर सेट ऑफ a के अंदर जो एलिमेंट होगा वो आएगा कहाँ से? सेट a का तो सबसेट होगा. अगर सेट a का सबसेट x है, so we can say that x is also the subset of b because set b के अंदर का एलिमेंट भी x है. तो इसका मतलब x जो होगा वो पावर सेट ऑफ b का क्या, तो x जो एलिमेंट होगा, सेट x जो एलिमेंट है वो सेट b का भी क्या होगा? एक सबसेट होगा. बिकॉज x इज द एलिमेंट ऑफ सेट x. तो मैंने सपोज किया कि जो सेट x है, जो सेट x है, जो सेट x है उसके अंदर का एलिमेंट क्या ले लिया मैंने? x ले लिया, स्मॉल x, दैट इज कॉल्ड स्मॉल x. स्मॉल x इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल सेट x. यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, सेट x लिख सकते हैं. सो वी कैन से दैट अगर सेट x का एलिमेंट x है तो x एलिमेंट किसका भी होगा? सेट a का भी होगा. सो वी कैन से दैट x इज द स्मॉल x इज द एलिमेंट ऑफ a. सो
x is also the element of set b, so it means set a का जो x एलिमेंट है वो set b के अंदर भी है। देखो क्योंकि वही x तो ये भी है, set x जो ये है वही x ये भी है, तो इट मीन्स सेट a के अंदर का एलिमेंट किसके अंदर भी है, सेट b के अंदर भी है। सो वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट, अगर सेट a के अंदर का x एलिमेंट सेट b के अंदर मौजूद है तो हम क्या कह सकते हैं, a इज द सबसेट ऑफ b, दैट इज माय फर्स्ट रिजल्ट। ओके, आफ्टर दैट आई टेक दिस पार्ट, क्योंकि इस पार्ट से मेरे को क्या मिल गया, इफ ए इज द सबसेट पावर सेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी, तो मेरे को क्या मिला, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब सेम रिजल्ट यहां से लेंगे, इफ पावर सेट ऑफ बी इक्वल पावर सेट ऑफ ए, तो मैंने सपोज क्या किया, सो दैट इम्प्लाई पावर सेट ऑफ बी के अंदर का एक न्यू एलिमेंट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड वाई, दैट इज कैपिटल वाई। Capital Y is the element of power set of B. So, capital Y is the element of set A. So, it means capital, देखो, it means that is not equal, that is subset. Okay. So, it means power set of B, दोनों, both are the subset of itself. देखो, PA is the subset of PB and PB is the subset of PA. Clear? नाउ यहां से तो हमारा क्लियर हो चुका है फर्स्ट पार्ट। नाउ पावर सेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो इट मीन्स पावर सेट ऑफ बी के अंदर के जितने एलिमेंट हैं वो पावर सेट ऑफ ए के अंदर होंगे। सो आई कैन टेक इन अ न्यू एलिमेंट वाई, इट मीन्स वाई इज द सेट, क्यों वाई, बिकॉज सेट बी, बिकॉज पावर सेट ऑफ बी इज द ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट बी, इट मीन्स सेट बी के जितने सबसेट्स होंगे, तो सेट बी के सबसेट्स क्या हुए, वाई हुए। तो वाई एलिमेंट यदि पावर सेट ऑफ बी के अंदर है तो वाई एलिमेंट किसके अंदर भी होगा, पावर सेट ऑफ ए के अंदर भी होगा, क्यों, क्योंकि दैट इज द सबसेट। सो व्हाट आई कैन से दैट वाई इज द सबसेट ऑफ बी, सो आई कैन से दैट वाई, कैपिटल वाई, दैट इज कैपिटल वाई इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर? बिकॉज अब कैपिटल वाई जो है सेट है, तो इस कैपिटल वाई के अंदर का एक एलिमेंट हम लेंगे, दैट इज स्मॉल वाई, बिकॉज स्मॉल वाई इज द सबसेट ऑफ सेट बी, दैट इज दैट सेट। ओके, नाउ वाई इज द सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स वाई के अंदर के सारे एलिमेंट किस में हैं, बी में है, तो वाई के अंदर एलिमेंट क्या है, अरे वाई, सेट वाई के अंदर का एलिमेंट क्या है, वाई है, स्मॉल वाई। तो अगर सेट y के अंदर का एलिमेंट स्मॉल y है, तो अगर y के अंदर स्मॉल y है तो सेट b के अंदर भी तो y होगा। सो वी कैन से दैट y इज द एलिमेंट ऑफ b, सो वी कैन से दैट y इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट a। इट मीन्स सेट b के अंदर का जो स्मॉल y एलिमेंट है वो किसके अंदर भी हुआ, कैपिटल A के अंदर भी हुआ। सो इट मीन्स b इज द सबसेट ऑफ a, दैट इज माय सेकंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट इस सेकेंड स्टेप से निकला। इन फर्स्ट स्टेप, सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, इन फर्स्ट ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, so we can say that a equal b, so it means if a is the subset of b and b is the subset of a, so we can say that a equal b, it means all the element of a are in b and all the element of set b are in set a, so we can say that a equal b, that is very easy. So now you will make question number 6 very easily. Okay, now you will make question the miscellaneous exercise of chapter number first. So 1 to 6 question very easy. Now you make question number 1 to 6 very easily. Okay.